Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the chapter Reaching the Age of Adolescence, which is a chapter of class 8 NCERT. So basically, chapter का नाम क्या है? Reaching the Age of Adolescence. अब भला ये है कि adolescence है क्या भाई? Adolescence वो phase of life है जिससे currently शायद आप undergo कर रहे हो, है ना? The age of life जो 11-12 ईयर्स से स्टार्ट होके 19-20 ईयर्स तक रहता है, जब आप कंप्लीटली ग्रो होते हो मेंटली, फिजिकली, सोशली, बहुत सारे टर्म्स में, उस फेज ऑफ लाइफ को हम एडोलेसेंस बोलते हैं. इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है? इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि आपके बॉडी में क्या चेंजेस अभी हो रहे हैं, आप कैसे चेंज करोगे एंड हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू एन एडल्ट, है ना? सो before starting the chapter in details, let us first discuss about the different phases of life. तो एक इंडिविजुअल जब ग्रो होता है तो आफ्टर टेकिंग बर्थ उसके लाइफ में 5 डिफरेंट फेजेस होते हैं. द फर्स्ट फेज दैट एन इंडिविजुअल अंडरगोस is called infancy. Infancy, it starts right from the birth and continues up to 2 years of age. ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें आपको कंप्लीटली किसी और की हेल्प चाहिए होती है. आप फीड खुद से नहीं कर पाते हो, आप वॉक खुद से नहीं कर पाते हो, आप प्रॉपर्ली बोल नहीं पाते हो, आपको सभी चीजों के लिए दूसरे का हेल्प चाहिए होता है. दिस फेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड इन्फेंसी. द सेकेंड फेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड चाइल्डहुड. Childhood starts from 3 years of age and lasts up to 11 to 12 years of age. Now, thing is that in case of childhood, आप physically तो grow करते हो, आप mentally भी grow करते हो, and इस फेज ऑफ लाइफ में आप ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते हो. यू आर ऑफ कोर्स डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर डिफरेंट अदर फैक्टर्स, बट नाउ यू कैन वॉक, यू कैन मूव, यू कैन टॉक, यू कैन प्ले. हमेशा आपको खेलना कूदना ज्यादा पसंद होता है एंड आप हमेशा लेस स्ट्रेस्ड रहते हो, राइट? आपके जो इयर्स थे स्कूल के, क्लास 1 के, क्लास 2 के और नर्सरी केजी वाले, वो हमेशा यही रहे होंगे, राइट? यू वर एंजॉयिंग योर लाइफ, एकदम मस्त, क्या हो रहा है कुछ हमें पता नहीं है, but we are completely enjoying. This phase of your life is called childhood. Now, you have entered a special phase of life जिसको हम बोलते हैं adolescence. This phase is transitional phase of your life. ये actually child से adult के बीच में जो phase of life होता है उसे हम adolescence बोलते हैं. During this phase of life, not only you grow physically, you also grow mentally, you also grow socially, you grow in behavioral terms, and most importantly आप reproductively active हो जाते हो. मतलब during this phase of your life you'll become capable of reproducing and you will gain reproductive maturity also. तो ये phase of life आपके लिए बहुत ही important है because ये एक child को एक adult में convert करने के बीच में fall होता है. सभी changes जो आपके body में होने हैं to become an adult will all take place during this particular phase of life only. So this phase of life starts from 11 to 12 years of age and covers up to 19 years of age. 19 years तक आप एक adolescent कहलाते हो. And then right from 20 years of age to up to 55 to 60 years of age आपको एक adult consider किया जाता है. Now you are a young individual जो काफी सारा काम करेगा, जो pressure लेगा और अपने लिए work करेगा. And lastly, after the 60 years of age, you are generally considered to be retired और आप old ages में move on करते हो. अब इससे आप जितना जियोगे आपका old ages रहेगा and finally an individual dies according to the time. So majorly we can classify the entire phases of life into 5 different phases. The first one is called infancy. It starts from the birth, right from the birth to up to 2 years of age. Then comes childhood. It starts from 3 years of age and lasts up to 11 to 12 years of age. Then it comes adolescence. Adolescence starts from 11 to 12 years of age and lasts up to 90 to 20 years. And then comes the adult phase, which is the largest phase of life. And here
It starts from 20 years of age to up to 55 to 60 years of your age. And then comes the retirement phase or the old age phase, where now your body starts to degenerate again. आप weak होते हो, आप में उतना strength नहीं रहता है. And eventually, time after time, the individual, when lives his age, sooner or later dies. Am I clear to you? In this chapter, we are majorly going to discuss about the adolescence phase of life, what changes are going to take place in your body, and how, as an adolescent, as a teenager, आपको कैसे उसको overcome करना है. So, basically, what is the adolescent phase or the adolescence? What is it? It is the phase of life. It starts from 11 years of age and lasting up to 18 to 19 years of age. इस phase of life को आप adolescent phase या फिर adolescence बोलते हो. But अगर आप उसे undergo कर रहे हो, अगर आप इस phase में हो, if you are in the phase of adolescence, then you are considered as adolescents. देखिए, if you are undergoing the phase of adolescence, then you are considered as an adolescent. क्या बोलेंगे? Adolescent. And आप सब जो adolescents हो, उनका age जो है, that is, वो उसमें बहुत सारा teen ages cover होता है. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. तो since आपके सारे teen ages जो है, ये adolescent phase में cover हो जाते हैं, तो इसीलिए adolescents को हम क्या बोलते हैं? हम उनको teenagers भी बोलते हैं. So thing is that this period covers the teens of life, that is from 13 years to 18 or 19 years of age, and thereby adolescents are also called what? They are called teenagers. The next up, you are given that during this phase of life, your body undergoes different changes and your body attains reproductive maturity. आप capable of reproduction तो हो जाते हो at the start of this phase only, पर आप reproductively mature कब तक होते हो? By the end of the phase. मतलब आप capable हो गए हो, but आप mature नहीं हो अभी भी उसको लेके. धीरे धीरे इस phase of life में आप वो maturity भी gain करोगे. And lastly, we are given that in case of girls, ये जो phases of life हमने पढ़ी हैं, right from infancy to up to old ages and death तक, ये सभी का age इसमें थोड़ा या बहुत vary करता ही है. But when we talk of adolescence particularly, so in case of girls, this starts little earlier, and then in case of boys. Generally, it is observed that in case of girls, 11 to 12 years के बीच में the phase of adolescence starts. Whereas in case of boys, 12 to 13 years or 14 years में आपका adolescence phase start होता है. And this thing may vary from person to person, from girl to girl, boy to boy. ठीक है, ये variation रहेगा. हम बस आपको एक average age बता रहे हैं. Girls में क्या है? 11 to 12 years of age, and in boys 12 to 13 years of age. This is the time when an individual turns into an adolescent. Am I clear to you? Yep. So let's move on to the next part. In the next part, we are given about puberty. Now, what is puberty? ये तो कुछ नया है. Puberty is the marking of the start of the adolescent phase. जब आपका adolescence mark होगा, तो वो किसके through mark होगा? Through puberty. Puberty is an indication कि भाई now from child's body you are going to convert into an adult's body. समझ में आया कि नहीं? This marks the time when the child's body starts to turn into an adult's body. And during this phase, a lot of changes starts to occur, which continues in the later ages of the adolescence. This particular process में, if you undergo puberty, you will mark the process of sexual maturity. You will become sexually mature. Then puberty is that when boys and girls become capable of reproduction. While you are in the phase of puberty, मतलब जैसे ही आपका adolescence start हुआ, you will become capable of reproducing. But आप mature नहीं होगे, आपका maturity होने में फिर से आपको पूरा adolescence phase undergo करना पड़ेगा. Then next is that puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. आप जब completely mature हो जाओगे, तब puberty phase end होगा.
एंड इस फेज में बॉडी बहुत सारा डिफरेंट चेंजेस अंडरगो करता है. In the next video, we will discuss about all the changes that the body undergoes during the puberty phase of life, and then we'll slowly move on to the later parts. So, this much for now. See you soon in the next video. Bye bye. Stay tuned.